Hello everyone. So students, in last period we discussed about the rules and characteristics of the image formation by using the concave mirror and the convex mirror. So in today's period we will discuss about that the image formation by using the concave mirror. So in this we will see the position of object on different places, and that time the image will be formed at different places. So first we will see that when object is placed at object is placed between P and here. First position, object is placed between pole and the focus point F. So first we have to draw one concave mirror. Then second point, we have to mark pole P. The pole P is at center of the mirror. Then draw one parallel line. C is the center of curvature, and the between the center of curvature and the pole, focal point, that is the focus point F. Now here the position of object is between the focus and the P. So here we can place object. So we have to denote two names A and B. One thing keep in your mind, the height of the object, it should not be large than the mirror. Okay, इस mirror से इस object की height maximum नहीं होनी चाहिए. So here we have to take the help of scale. So by using that the scale, we can draw the accurate and the correct lines. So image will be formed very correctly. Now as per the rules, in last period we discussed about the 4 rules. As per the rules, we can pass the rays through the image. From the point A, we can pass one parallel line. Okay, the line is parallel with the principal axis. When the ray is parallel with the principal axis, so after the reflection, that ray will pass through the focus. So this parallel ray, after the reflection, will pass through the focus like this way. Here you can see very clearly. Okay, so ray will reflect through the focus point. Now again we have to pass the second ray. So second ray we can pass through the center also. Okay, like this. Okay. So whenever the ray is passing through the center, so that time that ray will reflect through the same path. Okay, अगर कोई भी रे सेंटर से पास हो रहा है तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा like this way. So now we are having the two lines. So we can see that these two lines cannot meet each other. ये two lines एक दूसरे को कभी नहीं मिल सकते हैं. In future they will not meet with each other. But now we can consider the back side imaginary lines and back side part of the lines. Okay, और जिस पॉइंट पे ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट पॉइंट हमें नोट करना है और उस पॉइंट को A डैश नाम देना है. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स उसी पॉइंट से हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, यहाँ पे हम एरो मार्क शो करेंगे और जहाँ पे लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है उस पॉइंट को हम B डैश नेम से इंडिकेट करेंगे. नाउ A डैश एंड B डैश इज अवर इमेज. ओके, हमने इस इमेज में देखा था कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर the two lines are not intersect with each other, but backside they can intersect with each other. So the nature of image is backside of the mirror. Nature of image is backside of the mirror. So यहाँ पे हमें 3 points consider करने हैं. The first is position, nature, and third one is position, nature and size. Okay, so the position is
back side of mirror. Okay, mirror is back side of the image is back side of the mirror, so that's why it is a virtual and erect. Okay, it is the back side of the mirror, so that's why it is virtual and erect. And the size is here is the original size of our object, and we got the magnified image. Okay, so it is larger than the original image, larger than original object. Okay, so whenever we are keeping any object in between the focus and the pole, so that time we will get the image behind the mirror. Okay, we will get the image behind the mirror. It will be virtual and erect, and the size of the image is highly magnified, or it is larger than the original object. So this thing you have to keep in your mind. So whenever we are whenever the position of object is between the focus and the pole. So now the next we are going to discuss, that is in that the position of image is at focus F. Okay, position of object is at focus. So first we have to draw one mirror. Then at center pole. Okay, one line is there. Center of curvature, and between the center of curvature and pole, point focus. Okay, now the position of object is at focus. Okay, position is at focus. Now two names we have to do, A and B. A, B is our object. Now it's time to pass the ray through the object A, B. So here is one parallel ray. When the ray is parallel with the principal axis, after reflection that ray will pass through the focus. Okay, so use scale. Okay, so here you can see that ray will be parallel with the, that ray will pass through the focus. After reflection, it will pass through the focus. Now again, second ray we have to pass through the center. Okay. Now in this case, you can see that when the ray is passing through the center, so after reflection it will be reflect through the same path. Reflection के बाद वो उसी same path से आ जाएगा, So here you can see the two lines are parallel with each other. In first case, the two lines are not parallel with each other, but they cannot meet. In future they cannot meet. In front of the mirror they will not meet, but back side of the mirror they can be meet. But parallel lines cannot meet with each other. In future they will be meet, but here you can see they will not meet with each other. So where the image will be formed? The question mark is that where the image will be formed. So here we can say that in future or at infinity place. Okay, at infinity place the two lines will be meet with each other. Okay, so at infinity place the image will be formed. So here again some points. So the first position at infinity, यहाँ पे infinity place पे क्यों है? Because these two lines are parallel with each other, or we don't know that when they will be meet with each other. So that's why at infinity place they will be meet. Now the second one is nature. So here nature is the image will be from real and inverted.
Okay, when the image is formed in front of the camera, so that time it is a real and inverted. Inverted it means that it हमें वो उल्टी image दिखाई देगी and then size is highly magnified. So when the image is formed backside of the mirror, so that time we will get the image that is virtual and the erect. And when the image is formed in front of the mirror, so that time image is real and inverted. So these two things you just keep in your mind when the object is between pole and focus. So that time position of image is backside of the mirror, nature is virtual and erect, and size is highly magnified. When the object is at focus, so that time position is at infinity, nature is real and inverted, and size is highly magnified. So now we will discuss about the next part. So here we will discuss about the third next position, that is when the object is placed between the focus and the center of curvature. So here you can see when the object is placed between the focus and the center of curvature. So here we can keep our object, that is object A, B. Now it's time to draw the it's time to pass the rays. Okay, so first ray, it should be parallel. Okay, ray when the ray is parallel with the principal axis, so that time ray will be passed through the focus. So like this way the ray will reflect through the focus. Now it's time to pass the second ray. So is it possible to pass the ray through the center? No, this time it is not possible to pass the ray through the focus. So now again we know that the two rules. So as per the second rule, we can pass the ray through the focus. Okay, here when the ray is passing through the focus, so that time it will reflect and after the reflection it will be parallel with the principal axis. So here in this diagram you can see that the two lines are intersect in this point. So before that once again you just see कि सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रे जो है वो पैरेलली पास किया. व्हेन द रे इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. देन सेकंड रे हमने फोकस से पास किया. व्हेन द रे विल बी पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दिस टू पॉइंट्स intersect at this point, and that point will be I already denoted by using A dash. So उसी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, सो इस पॉइंट को हमें बी डैश नाम देना है. नाउ योर इमेज विल बी लाइक दिस. ओके, सो हियर क्लियरली यू कैन सी द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Image is formed beyond the center of curvature. Now the position of image, it is beyond the center of curvature. Okay, it is beyond the center of curvature. Then image is formed in front of the mirror, so that's why it is a real and inverted. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे उल्टी इमेज फॉर्म हुई है. That's why it is a real and inverted, and as compared to the object it is a larger. Okay, ऑब्जेक्ट से वो इमेज जो फॉर्म होने वाली है वो लार्जर है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पोजीशन, देन नेचर, एंड लास्ट वन इज अ साइज. सो पोजीशन इट इज beyond center of curvature. Nature it is a real and inverted, and the last one is size, larger than object.
Okay, so the position of the object is between center of curvature and focus. When the object is between center of curvature and the focus, so that time we will get the image beyond the C. Then afterwards it is real and inverted and it is larger than the original object. Now it's time to keep the object on the center. ओके, हम धीरे धीरे हम प्लेस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. सबसे पहले इन दोनों के बीच में थी, देन फोकस पे थी, देन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में थी. नाउ इट्स टाइम टू कीप द इमेज ऑन द सेंटर सी. सो हियर so now we are going to discuss about the fourth position. In the fourth, that object will be placed at center. Okay, that we will place the object at center. There is the center of curvature, focus F, and now we have to keep the object at center. Okay, so AB, then start to pass first ray, which is parallel with the principal axis, then it will be reflect to the focus. I think आप सबको ये सारी चीजें भी लर्न हो गई है. ठीक है? Okay, one thing I just forgot. We have to use scale. Now draw second ray. Again the second ray will be pass to the focus. Now when the ray will be passed to the focus, so it will reflect, and that reflected ray is parallel with the principal axis. So here we go. Here the lines intersect with each other. So now that point is known as the A dash. Now it's time to join the two lines. So here very clearly you can see that okay, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इमेज इज फॉर्म एट सेंटर. ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे प्लेस कर रहे हो तो इमेज सेंटर पे ही फॉर्म होगी. एंड देन पोजीशन इज एट सेंटर, नेचर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम. सो हियर आई डोंट पोजीशन at C only. If object is at C, then position is at center of curvature only. Then nature, image is formed in front of the mirror, so that's why it is a real and inverted. And the next one is size. Size is same as object, same as ऑब्जेक्ट. ओके, वंस अगेन यू जस्ट सी, हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा था. सेंटर पे रखने के बाद पॉइंट ए से पैरेलल लाइन पैरेलल रे हमने पास किया था. वही रे अगर पैरेलल है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होता है. देन सेकंड रे हमने फोकस से पास किया था. जो रे फोकस से पास होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट होता है. देन टू पॉइंट जो है वहाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, हमने पॉइंट ज्वाइन कर लिए. जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से अगर हमने पॉइंट ज्वाइन कर लिए तो दैट टाइम वी गॉट द एग्जैक्ट साइज इमेज. ओके, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें एग्जैक्ट साइड की इमेज फॉर्मेशन होगी. तो ये ध्यान में रखने के लिए बहुत ही ईजी है. व्हेन द इमेज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सो वी विल गेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन वी विल गेट द इमेज एट सेंटर ओनली इन सेम साइज. Okay, now we will discuss about the next position. So student, next position, it is a beyond C. When the object is placed beyond C, so that time one parallel ray we have to pass. When the ray is parallel to the principal axis, then it will be passed to the focus. Again same thing. That's why the characteristics are too much important. Okay, so like this way you can see the ray will be passed. Then second ray we can pass through the center like this way. So
सेंटर से अगर किसी रे को पास करेंगे तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगा. सो हियर वी गॉट हियर द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. तो उस पॉइंट को हम ए डैश नाम दे देंगे और इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट कर लेंगे. सो दैट टाइम बी डैश. सो हियर वी कैन सी दैट वी गॉट द इमेज एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. ओके, डायग्राम से हमें क्लियरली दिखाई देता है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा जाता है, सो दैट टाइम इमेज फॉर्मेशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस बिटवीन सी एंड एफ. Then the size of image is too much small as compared to the object. Okay, it is diminished or as compared to the original original object, it is a smaller. And nature, obviously it is in front of the mirror, so that's why it is a real and inverted. ओके, रियल एंड इन्वर्टेड. और इमेज आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, इट इज डिमिनिश्ड. ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज फॉर्मेशन है, सो इट इज डिमिनिश्ड. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, सो दैट टाइम image will be formed between C and F. It is diminished and it is real and inverted. Now the last position we are going to discuss, that is when ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. वी डोंट नो अबाउट दैट कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है. सो हम पोल पे रेज पास करेंगे. कहाँ पे रेज पास करेंगे? पोल पे. ओके, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ए पॉइंट है और उससे हमें क्या करना है? रेज पास करने हैं. ये हमारा पोल है, एक रे आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो जब यहाँ पे मिरर पे रेज आ जाते हैं, एंगल बनाते हैं, पोल पे आ जाते हैं, सो दैट टाइम वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. वो रेज क्या हो जाते हैं? सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. सो लाइक दिस वे. अगेन वन रे, एक रे आ रहा है पोल पे, सो यहाँ पे वो क्या करेगा? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी टू जो रिफ्लेक्टिंग लाइन्स है हमारे, ये टू लाइन रिफ्लेक्टिंग लाइन्स है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. सो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हियर यू कैन क्लियरली सी दैट द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट फोकस. ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स दैट जो भी फोकस पे इमेज फॉर्म होती है, दैट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. वो बहुत ही छोटी डॉटेड साइज में हमें दिखाई देती है. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी प्लेस, सो दैट टाइम जो भी इमेज फॉर्म होने वाली है, दैट इमेज इज वी कैन से दैट इट विल बी एट फोकस. कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी? एट फोकस. Okay, then nature, obviously in front of the mirror, so that's why it is a real and inverted. And then last thing, size, it is diminished, highly diminished. Okay, so these all are the 6 position related to the concave mirror. Okay, I hope students आपकी ये जो सारे पोजीशंस है आपके ध्यान में रहेंगे. देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन द पोजीशन. इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द. एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आप अगर ध्यान में रखोगे, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दैट द इमेज फॉर्मेशन.